So ultimately this is his intraocular number X-rays. So this is the pictures. You can see the shoulder is well reduced, and we put a screw to fix that bone fragment. It is to prevent further redislocation. That's the main advantage. இது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் நம்ம போஸ்ட் ஆப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ பேஷண்ட் வி கெப்ட் him in ICU for one night just for observation எல்லாமே, just because of extensive surgery observation for one night we had kept him in ICU, well managed with medical team also, and then finally he came back to work the next day, and this was his post op X-ray. We can see that shoulder is back to where it is, nice reduced joint, and it is maintaining its position. So just I want to just the final highlights of the thing. So what was required was full thorough assessment and documentation. Munnadi eppadi irundhathu and appura eppadi irundhathu. So that was more important. Extensive workup, CT, MRI, nerve conduction study, X-rays, blood investigations. Adu ellame pannite extensive work and planning with the anesthetist, with the plastic surgeon, with the radiologist. So we sat together and we planned what are the steps involved and everything. So that's why it's multidisciplinary approach. Neurology kuda nerve conduction study, neurologist kuda involved pannittu, plastic surgeon, orthopedics obviously, and then finally intra-op kuda neuromonitoring kuda narambu eppadi work avudha illaya adana paakutittu adukku post op ICU, and then finally we were able to take the physiotherapy, and he started moving his shoulder gently. So he's in a shoulder sling currently. Any kuda number sutures, stitches alla inki remove, we do that. How long for him to take a regular job? It will take a few months. It will take a few weeks to months for things to recover for him. Narambella recover avanu main. The problem will not recur again. Sorry, Problem will not recur again. Shoulder it should not recur again. Adukku dhaan நம்ம procedure எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு தான் நம்ம extra procedure கூட பண்ணிருக்கோம். What type of fractures? Dislocation and greater tuberosity fracture. No, he fell down or... आप बोलो, आप क्या कैसे आए, क्या हुआ था और अभी कैसा है, थोड़ा सा अच्छा है। हम आए तो वहाँ गिर गए थे, गिरने के बाद वहाँ से डॉक्टर दिखाने के बाद बोला कि हाँ नहीं होगा, बाहर जाके दिखाइए। तो वहाँ से आके ठीक है, यहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर साहब देखने को बोला अभी आप पहले से बहुत ठीक है। अभी इधर गिर गया है तो गांव में, हम गाँव में गिरे। कैसा SRM कैसा आपको मालूम है? SRM हॉस्पिटल कैसा मालूम होता है? किसी जान पहचान से मत नहीं, वो कैसा जानते हैं हॉस्पिटल इधर ही है चेन्नई में? और हम लोग के यहाँ विजिट कर रहे हैं और जान पहचान जान पहचान से आए। जान पहचान सब जान पहचान सब जान पहचान। ये अभी कुछ दर्द कोई ऐसे अभी दर्द अभी ठीक है, पहले जैसे का दर्द अभी दर्द नहीं है, हल्का है।